हाय फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील में आपके साथ हूं। और आज हमारे साथ हैं वन ऑफ आवर कस्टमर मिस्टर एंड मिसेस चंद्रशेखर फ्रॉम दिल्ली। हाय सर, हाय मैम, हाउ आर यू? Hello. Good, good. How are Fine. you, Ankit? I am also good. I am also good. Welcome to the Gurgaon Millennium City. And today we just want to take some of your feedback regarding the Gurgaon market, regarding the investment. आपको कैसे अच्छा लगा, क्या पसंद आया, क्या आपको नोटिस किया गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो थोड़ा सा आपका फीडबैक जानेंगे। सो Sure. थोड़ा सा बताइए हाउ यू कम अप विद द गुड़गांव मार्केट, कि आपका जैसे आपने इन्वेस्ट किया है गुड़गांव में, तो व्हाई यू आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द मार्केट, और क्या चीज है जो आपको गुड़गांव के लिए प्रेरित किया आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेनियम सिटी में? See, for this question has a very long story. First of all, you need somebody, a professional who can help you to put your money into the right direction, who can guide you. And again, Ankit ji, I would be very upfront. The credit goes to you. It is your 2 years full effort. When you started, you first approached me and you suggested me, you guided me rather, I would say, whatever the money you have, where to invest. So I had a very little amount and I was thinking to invest somewhere. And it was you who suggested, why don't you start with commercial? And that is where I came into this project with you, and I have invested my money, and I am very happy the way you have guided me, the way you have shown me the area, and overall development happening in the Gurgaon. The credit goes to you. Second thing, because my background where I am working into Gurgaon, I have seen almost all the corporates are coming in Gurgaon. The best fruit of India, I think, first comes to Gurgaon. So it is ideally a right investment at a right time, which you have helped me out in this. And moreover, if you come to northern part, if I say in a northern city, there are a lot of Delhi NCR cities which are developing. But Gurgaon is, I would say, well planned city. Lot of good construction, good developers are coming. Lot of infrastructure development is coming. Moreover, if you see the master plan of Gurgaon to 2031, again, if you see Mr. Gadkari's speech, the way he has suggested the roads connecting coming up Delhi Mumbai highway, and if I talk about all southern peripheral highway, you talk about, you have a Yamuna expressway over here. I'm sorry, Dwarka expressway which Dwarka. is coming. सरका थोड़ा All these things has given Right. me a boost that I should invest in Gurgaon, Right. and I believe this is a good city to be invested. और जैसे बोलते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। सो बिहाइंड दिस इन्वेस्टमेंट जो मेरे को सबसे ज्यादा, मेरे को सर को सबसे ज्यादा इस इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्पायर्ड किया, या मतलब एक कहते हैं ना कि जो फॉलो अप किया, वो मैम का फॉलो अप सबसे ज्यादा रहा था इस इन्वेस्टमेंट को लेके। तो मैम का एक बार फीडबैक जानना चाहूंगा कि मैम आपको किस तरह से हुआ कि यू हैव टू बाय इन द गुड़गांव मार्केट ओनली, एंड द कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा यहाँ पर निवेश करने के लिए? आपकी क्या राय है? मेरी राय तो सारी उन्होंने बता दी। अब मैं तो पर्दे के पीछे ही काम करती हूँ ना। In fact, I would say she was the one when last time you had shown us couple of projects. Right. I've never thought that this is a day when I'm going to finalize. She was the one who said to you, Ankit जी मुझे ये प्रॉपर्टी फाइनल करनी है और आज मैं लेके जाऊंगी. Right. So it was surprising for me also, but after all that's what you rightly said कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी ना किसी एक लेडी का हाथ होता है. आई वुड से दैट्स ऑफ कोर्स माय बेटर हाफ. सो शी इज द वन इंस्ट्रूमेंटल. क्योंकि कई बार तो मैं भी भूल गया था, तो मैम ने फोन करके, अरे अंकित यू टोल्ड मी दैट थिंग, तुम भूल गए हो। मैंने कहा नहीं नहीं, आई हैव नॉट फॉरगेटेड इट, आई जस्ट प्लानिंग टू गेट सम गुड इन्वेंटरी, सम गुड प्रोडक्ट टू कम आउट। तो मैम ने जो फॉलो अप रखा ना कॉन्टिन्यूअस, मैंने मैम का फॉलो अप नहीं रखा, बल्कि उल्टा मैम ने फॉलो अप रखा कि हाँ, अंकित मैंने बहुत फॉलो अप किया आपका कि बताओ मुझे क्या होता है फूड कोर्ट, क्या So, चीज होती है। ये एक बहुत ही यूनिक पार्ट था, ये एक बहुत ही यूनिक थिंग जो मैम ने कॉन्टिन्यूअसली रखा कि नहीं अंकित, वी विल टेक द होम डेफिनेटली, बट हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो एज एन इन्वेस्टमेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, और एक कॉन्टिन्यूअसली रेंटल का जो सोर्स है, एक रेंटल का जो एक इनकम है, बिकॉज आफ्टर द कोविड जो इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ सेकंड सोर्स ऑफ Second इनकम source. आफ्टर देयर Absolutely. मेन इनकम। सो
जब भी मेरा बात होता था, मैम से इंटरेक्शन होता था, तो हमेशा मैम के वी नीड अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, सो दिस इज व्हाट मोटिवेट आई थिंक बोथ ऑफ यू टू इन्वेस्ट इन द गुड़गांव पोर्टफोलियो, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग which you inspired. But investment के लिए तो you have the Noida also, you have Delhi also, you गुड़गांव also. तो आपको मतलब क्या फैक्टर था जो गुड़गांव का अच्छा लगा, या क्या चीज थी जो आपको एक फर्स्ट क्लिक में ही आपको पसंद आई कि नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो गुड़गांव विल बी द मोर फेवरेबल ऑप्शन एज कंपेयर टू द अदर मेट्रो सिटीज प्रेजेंट. तो आपको क्या अच्छा लगा गुड़गांव में कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस तरह से ग्रो करेगा, आपका क्या फीडबैक है? You are asking me or to her? Both. I am asking both of you because ultimately you have invested together in a joint name in the product. So the liability, the whatever the result, the capital appreciation will be both of you. आप दोनों को ही वो मिलेगा definitely. तो आपका मतलब पहला impression क्या था जब आपने गुड़गांव मार्केट को स्टडी किया या गुड़गांव मार्केट को जो देखा? So what is your first impression which have with you in your mind to just capture the investment, pick it here only, that it will grow to the better area? See, Ankit ji, I would say you talk about the biggest cyber city, which is in Gurgaon. You talk about the cyber hub, it is in Gurgaon. You talk about the best of the best outlet you find in Gurgaon. Airport connectivity you see. You have a railway connectivity. You have all connectivity. Plus, this every day or every week you come to Gurgaon, you find something new happening in Gurgaon. New road coming up, new planning has come up, new peripheral has come up. So lot of things which are coming in everyday development. Offices. The corporate hub, this is one of the biggest corporate 300 hub. Fortune companies corporate offices are in Gurgaon, which is again one of the biggest hub, and they are not that is the limited, they are expanding day by day. They're expanding day by day. So which is not happening in other part of NCR. Yeah. This is only in Gurgaon. yes. Moreover, I am from Delhi. Yeah. So if you see, I've been staying about 22 years, Ankit ji, in Delhi. Okay. Now, once I come to Gurgaon, the mindset of people is different. I'll take in a very small example. In Delhi, you are driving. See, in Delhi, traffic is one of the biggest hurdle. Parking is biggest challenge. Some or the other, wherever you park, somebody will dent your car, somebody will scratch your car, and then you land up having a big clashes with them. Right. But in Gurgaon, I have seen if by mistake somebody hits your car or some minor dent also happen, people are educated enough, they understand. Most of the corporate people are there. They will speak politely, they will understand. They will not become like road rage. It will never land up to that fight into that. They understand each other because everybody is working. They politely handle the situation. They are mature enough to cooperate with you. And सबसे बड़ी बात जब यहाँ पे दिल्ली के सारे लोग, because I was seeing it in since 2015, जितने भी लोग दिल्ली के यहाँ पे बाय करते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है Parking. How much is a parking? Parking. Shall I get along with my flat, villa or apartment, whatever? So they're very much true. The confined parking. about their parking spaces in this Millennium City, Gurgaon. Whatever the option they shortlist parking, they never left. Although in Delhi I stay in a gated society. Yeah. It's a very personalized society. I would say it's a gated society. 24-hour security, everything is there. No outsider vehicle can come. But still my challenge is I have to park my car outside my parking area. Or outside my gated area, which is unsafe. I don't know what is going to happen with my car. So that challenge, I don't think Gurgaon is coming up with all proper amenities. They build up proper parking place. I've seen most of the places, either if you go to other societies, you have basement parking or street parking. But you have your reserve parking, which is the best thing. So you don't have to worry next day office, oh, how will I take out my car? You straight away take out your car, drive to the office, and easily you can come out. And the roads are much wider. Roads are broad enough. You have a national highway, which is one of the first highway I would say, which is the fastest highway, Jaipur highway, which we can see. And the broad street, and distance wise within 10 minutes entire Gurgaon you can cover with the highway. मैम अगर आपसे पूछे कि दिल्ली और गुड़गांव की अगर आप बात करें, सिंस यू आर लिविंग इन दिल्ली, काफ़ी टाइम से आप वहाँ पे रह रहे हैं, और आप जब भी गुड़गांव में आते हैं, गुड़गांव के सोसाइटीज़ में आपके काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल भी है, तो आपको क्या मेजर डिफरेंस लगता है दिल्ली की और गुड़गांव की एक सोसाइटीज़ के अंदर? बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, जा रहे हैं रोड से, तो पी 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 करके ना आपके कान खराब हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। या और पार्किंग का जैसे सर ने बताया कि पार्किंग को लेके तो काफ़ी है ही प्रॉब्लम।
राइट, यहाँ तो ठीक है। चलिए। गुड़गांव के बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, ओके, बस ज़्यादा सर को पता है इसलिए बट मुझे गुड़गांव अच्छा लगा। राइट, एज कंपेयर टू दिल्ली यू फाइंड दिल्ली, गुड़गांव मोर बेटर yes, yes, प्लेस टू yes. लिव इन. हाँ जी। So, because I think your children are also planning to shift in Gurgaon because of their Gurgaon. job opportunities and opportunity, everything. yes. So Gurgaon will be better end-to-end places for your Mhm. I communication. have both the kids. My daughter is doing engineering. She has rather completed engineering. My son has just passed 12th standard, and I know their future is here only. There's no other place. Yeah, they also started the training at Nagaro also. Yeah. So She is that- doing her internship in Nagaro, and most probably after completion of this internship, she would get a placement also. And they have also seen Gurgaon, and they also want to go to Gurgaon only. They don't want to stay in Delhi. Great, sir. So you are happy with your investment which you have done at the Gurgaon commercial reality, and what is the message which you would like to give it to the 100%. other investors which are जिनको गुड़गांव में कुछ investment के लिए देख रहे हैं, उनको आप क्या message देना चाहेंगे The sir? message is very clear, dear friends. Anybody want to invest, best place is to develop. Best place to invest is Gurgaon. And before investing, hold a partner who is professional, who understands your need, and help you to do it in the right way. The person, I would say Ankit, my shop deal, I have seen as a more professional, and he understands his terms, what client want, what his client need, what is his budget. Based on that, he does not confuse you with lot of amenities and lot of things. He suggests this is a property, these are the things which are in your budget, and he gives the property which you can afford it and which will be always a profitable. So I would say invest in Gurgaon. It's the right time. Always any investment you have to do it in Gurgaon, but take a support of a professional person. And I would suggest Ankit, please Ankit. allow me to say, Thank you Ankit so is a professional doing thank you so much मैम. मेरा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यही रहता है कि मेरे जो भी क्लाइंट बेस है ना वो आसपास ही रहे, सो दैट जो भी एक कहते हैं ना कम्युनिटी बिल्डिंग होती है. आई वांट एवरी ऑफ माय कस्टमर शुड बी विद इन द किलोमीटर 3 to 4 किलोमीटर वेयर आई एम करंटली स्टेइंग, सो दैट एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है. फ्यूचर में आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई जरूरत है, कुछ कम्युनिकेशन है, तो जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत एक स्ट्रांग होती है. सो दैट इज द थिंग. और मैम आपका क्या फाइनल फीडबैक है गुड़गांव को लेके और गुड़गांव के इन्वेस्टमेंट को लेके? बहुत अच्छा है। जी, और यहाँ की मतलब जेंट्री को लेके, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, अब जब अंकित भी जी आपको देख लिया तो तो जो भी आप जब भी आप गुड़गांव में आते हैं यू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता एक्चुअली है यहाँ मैं पे. ज्यादा तो आई नहीं हूँ, लेकिन जितनी Okay. बार भी आई हूँ बिल्कुल न्यू ही दिखा है। ओके. बट अब यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस आप दोनों के साथ हैं. आप लोग जल्दी गुड़गांव में आइए, जल्दी से Thank you. जल्दी शिफ्ट होइए और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो, वो एक अगले और नेक्स्ट लेवल तक जाए, और डेफिनेटली आपको काफ़ी सारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिले उस चीज़ को लेके. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई शॉप डील साइड. Thank you so much. Stay safe, take care, and we'll meet you shortly in another video. Thank you for giving your valuable time for My Shop Deal YouTube family and providing this valuable content to us. Thanks Thank you, a lot, Ankit. sir. Thank you very much.